जो भी लेक्चर में रेगुलर है उनको समझ में आता है बहुत सारी चीजें, और वो काफी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आपको टेस्ट भी अपडेट किया था मैंने, कितने जनों ने देखा है क्या मालूम, आई डोंट नो। मेरा काम है अपडेट करना टाइम टू टाइम, टेस्ट अटेम्प्ट करना नहीं करना आपका काम है। So today we are going to see diuretics chapter. In the yesterday session, I have explained you about the urinary system. So urinary system, parts of your urinary system. This is in short related to urinary system. Now diuretics. Again, diuretics is a important chapter from your GPAT, Niper, and other exam point of view. These diuretics, they are used in the different conditions. So diuretics, basically these are the drug which will increase the urine formation, or they are known as a natriuretics, also known as a natriuretics. Natriuretics means these are the same thing, drug which increases the urine formation, also known as a sialuretics. So basically diuretics are the drug which increases the urine formation by mainly inhibiting the sodium reabsorption. So urine formation takes place in the three steps. Urine formation takes place in the three steps. First step is nothing but the glomerular filtration. Second step is nothing but the active. Second step is nothing but the selective reabsorption. And third step is nothing but the active secretion. Glomerular filtration में क्या होता है कि ब्लड में जो भी ब्लड है वो सब फिल्टर हो जाता है एक्सेप्ट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स. Okay, so everything is filtered, okay, including your carbohydrate, lipids, then amino acids, then toxic chemicals, then drug metabolites, and each and everything is being filtered. Out of that filter, 90% or 99% of that is being selectively reabsorbed. उसका reabsorption होता है तो ions, inorganic ions like sodium, potassium, calcium, etc. So everything is filtered in the glomerulus, in the glomerular filtration, during glomerular filtration. So everything is filtered except blood cell and plasma proteins, because they are heavy, they are having large molecular weight, they are not filtered through the pores present in the glomerulus. So that's why these filtered content, including your water, then various inorganic ions like sodium, calcium, potassium, chloride, other ions, including your sugar, including your glucose and all that, including your amino acids, including your waste material, all everything is present in that filtrate. Your body needs some minerals like sodium, calcium, potassium, amino acids, nutrient like glucose, etc., etc. So that is being reabsorbed from the tubules, that is being reabsorbed from the nephron. So after the glomerular filtration, so these things or these required chemicals, they are reabsorbed in the body through a luminal membrane known as a selective reabsorption. Now whatever is not required to the body, that is being actively secreted again in the tubules. So जो लग रहा है उसको वापस बोल लेंगे, जो नहीं लग रहा है उसको फेंक देंगे. So active secretion. So urine formation takes place in a three steps. So now during this urine formation, there are a lot of, in the tubules, in the nephron, there are a lot of different kind of channels, different kind of antiporters, different kind of symporters, different kinds of transporters. Okay, for glucose reabsorption you have glucose transporters, for amino acid reabsorption you have amino acid transporters, right? For there are different ion channels. They might be either electrical ion channels or simply an ion channels like sodium, hydrogen ion channel, sodium potassium ion channel, exchanger, contra pump, symport, etc., etc. Now lot of movement of ion takes place in the lumen and in the extracellular fluid through these ion channels across this lumen. जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के अक्रॉस में मूवमेंट चलते रहता है, सोडियम का, पोटेशियम का, क्लोराइड का, कैल्शियम का. ये जो मूवमेंट है दैट विल ड्रैग द वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, सो आपको ये बेसिकली एक चीज याद रखना है कि जहाँ पे सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन होगा वहां पे वाटर का भी रीएब्सॉर्प्शन होगा, जहाँ पे सोडियम का एक्सक्रीशन होगा वाटर का भी एक्सक्रीशन होगा. सोडियम एक्सक्रीशन लीड्स टू वाटर एक्सक्रीशन एंड लीड्स टू डायलिसिस. Sodium reabsorption, water reabsorption leads to increase in the blood volume
or you can say it leads to increase in the edema, hypertension. Okay, now diuretics are the drugs which are used to increase the urine formation, which are used to increase the urine formation. These drugs, they act on a selective reabsorption of sodium, and consequently they inhibit the reabsorption of sodium basically. Now these are the different sites. So whatever this is glomerulus, whatever blood is coming to the glomerulus, that is being filtered. So everything is being filtered here. Now this part is known as a PCT, proximal convoluted tubule. जो part है उसको बोलेंगे अपन proximal convoluted tubule. Now at this site, as I told you, there are a lot of ion exchange that takes place. There are a lot of transporters, there are a lot of symporter, contraporter, etc., etc., ion channels. Okay? So there are channels. Everything is filtered over here, and 90 okay, 90 more than 90%, you can say, which is being reabsorbed into body. यहाँ से जो फिल्टर हो चुका है, ये जो फिल्टर्ड है उसमें सब कुछ है. क्या है? ग्लूकोज है, आपके आयंस है, उसके उसमें अमीनो एसिड्स है, उसमें आपका न्यूट्रिशन है, आपके वेस्ट मटेरियल भी है. तो ये जो न्यूट्रिशन है, ये जो आयंस है, आपकी बॉडी को लग रहे हैं. दैट्स व्हाई यहाँ से ये ल्यूमेन से क्या होता है, यहाँ से रीएब्सॉर्ब होता है. सो यू कैन सी सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर्स, आयंस, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर, एक्सेट्रा. Okay, so 90, or you can say 98% of filtrate that is being reabsorbed from the PCT. So from here, glucose, amino acid, phosphate, organic ions, all they are the reabsorbed from the PCT. Okay, again some of the remaining ions, they are absorbed from the other parts of your nephron. This is structure of nephron. यहाँ से भी सोडियम, यहाँ पे सोडियम का और क्लोराइड का सिंपोटर होता है ना. दिस इज यूरिन. यहाँ से इसके ट्यूब के अंदर ट्यूब्यूल है, दिस नोन एज ट्यूब्यूल, बिकॉज दिस इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. सो ट्यूब्यूल, in that you have urine, but this is a extracellular fluid, and in the extracellular fluid, you can see, so here in the extracellular fluid is being absorbed, or in the blood it is being absorbed. This is being absorbed in the blood, जो बाहर जा रहा है, right? So here at the site 1, the concentration of urine is a hypertonic related with the blood, but यहाँ पे जो urine होता है बहुत ही concentrated होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है. कहाँ पे? When this filtrate is there, so at this site there is a highly concentrated urine is there, right? So because in this urine lot of things are present. Now the concentration will decrease when urine will move to the next. Okay, so here also most of the water, they are being reabsorbed by passive diffusion, by active transport. So 98% of filtrate that is being reabsorbed. Only 1 to 2% filtrate is being forwarded. Okay, now again urine will get concentrated, become hypertonic, and then in the thick ascending limb, इसको बोलेंगे अपन thick ascending limb. ये होता है ना, ये होता है thick descending limb, ये होता है thin descending limb, तो thin ascending limb, तो thick ascending limb. So again यहाँ पे sodium chloride symporter होता है, symporter, that is being also, sodium and chloride is being also reabsorbed in the urine. So water भी जाएगा उसके साथ. Side 3 जो होता है, ऐसे thick ascending limb of Henle, thick ascending limb. So at there also sodium chloride potassium co-transporters. Sodium chloride potassium co-transporter pump is also there. So it also drags the sodium inside into the extracellular fluid. तो यहाँ से भी सोडियम को reabsorb होगा. So all this is the reabsorption. जहाँ पे रेड रेड दिख रहा है आपको, सब reabsorption हो रहा है, वापस लेके जा रहे हैं इसको. ठीक है. Then again this is known as site 3, and this one is known as a collecting duct. That is site 4. At a site 4 also lot of things it is being also reabsorbed. यहाँ पे देखो sodium is reabsorbed. So along with the sodium, water is also reabsorbed. Here is another sodium potassium exchange pump. Sodium potassium exchange pump. So from site 5 also sodium is also dragged in the extracellular fluid. So along with the sodium, water will come. जिससे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप होता है, वहां से भी सोडियम अंदर जाता है तो वाटर भी जाएगा.
So it is just a diagrammatic representation of different sites where there is a reabsorption of sodium and water takes place. So thick ascending limb of loop of Henle which is impermeable to the water. Thick ये जो thick ascending loop of Henle, so it is impermeable to the water. यहाँ से ascending limb से नहीं आएगा water, देखो you can see. Then glucose, amino acid, organic ions, they are absorbed from the PCT only because they are very essential. And जहाँ जहाँ से सोडियम reabsorb होगा, reabsorption ना पहले तो filtered हो चुका है filter से, बाद में filtered से reabsorb हो रहा है बॉडी में, यहाँ से हो रहा है, 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 यहाँ से हो रहा है. All these are the different sites for reabsorption of sodium, and along with the sodium water is also moving. So these are the sites for reabsorption of sodium. Sodium absorb हो रहा है. Okay? So now most of the diuretics, they inhibit the reabsorption of sodium by inhibiting the one of the transporter, either sodium potassium transporter or sodium chloride symporters or sodium chloride potassium contraporter, etc., etc. So that the aim is nothing but the to inhibit the reabsorption of sodium. अगर सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन होने नहीं दिया, सोडियम का क्या हो रहा है, सोडियम एक्सक्रीशन हो रहा है ना. अगर सोडियम, अगर ये पंप इनहिबिट किया, फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम सिम्पोर्ट, so ये पंप है सोडियम पोटेशियम सिम्पोर्ट. इनका काम क्या है कि यहाँ पे जो भी यूरिन बना है आपका, उसमें सब कुछ आयंस है, सोडियम है वगैरह वगैरह, वाटर वगैरह, तो वो लग रहा है अपने बॉडी को, तो ये क्या करेगा, सोडियम को रीअब्सॉर्प्शन करेंगे आपकी बॉडी में, यहाँ से वाटर भी जाएगा, है ना. अगर इसको इनहिबिट किया तो सोडियम, ज्यादा सोडियम यहाँ से यूरिन में ज्यादा सोडियम आएगा, है ना. यूरिन में ज्यादा सोडियम आएगा मतलब वाटर भी ज्यादा आएगा, तो बाद में ज्यादा वॉल्यूम बनेगा. दैट्स हाउ दे एक्सर्ट अ डायरेक्टिक इफेक्ट. ओके, सेम इज ट्रू विद ऑल सोडियम आयन transporters like sodium chloride symporter, sodium chloride antiport, you know, sodium potassium transporter, like that, sodium chloride potassium, you know. So different drugs, they will act on a different sites. These are the sites where you can inhibit the reabsorption of sodium and even cause diuresis. Are you getting my voice? ये ना VS VASA RECTA, ये मैंने भी नहीं पढ़ा है अभी ये, बट इसका ज़्यादा कुछ रोल नहीं है. मोस्टली यहाँ पे दिस साइड, एड्रेस साइट, ये अल्डोस्टेरोन का साइट होता है. सो अल्डोस्टेरोन इज नोन एज अ एंटी डायरेटिक हार्मोन. यहाँ पे ये देख लो आप, यहाँ पे बुक में ये एक्चुअली यू माइट सी, ये यहाँ पे दिया होगा केडी त्रिपाठी में, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ आयन, दिस इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स and I'm trying to explain you in a simple language. थोड़ा आपको मैं आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट है समझ सके उतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये मूवमेंट जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपके टर्मिनोलॉजी से बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है. प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन ना कहाँ पे, ये आप देख लो उसका लॉन्ग फॉर्म, भी मुझे भी नहीं आता है, अगर दिखता है याद आता है तो बोलता हूँ. Now different sites at which different drugs will act. Okay? So you know that this is a afferent arteriole, this is efferent. Due to difference in the diameter, there is a development of hydrostatic pressure over here, and due to that there is a filtration. Okay, now after filtration, this is known as a proximal convoluted tubule, right? In the PCT also you have different sites. So proximal convoluted tubule, most of the reabsorption takes place from PCT. Now at the proximal convoluted tubule there is one enzyme, luminal enzyme known as a कार्बोनिक अनहाइड्रेस. सो व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेस? कार्बोनिक अनहाइड्रेस जो होता है यहाँ पे पीसीटी में होता है साइट 1 पे, तो उसका रोल होता है, सो दैट इज इन्वॉल्व इन द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड कार्बोनिक, ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके, सो दैट इज इन्वॉल्व इन द सोडियम एंड कार्बोनिक आयन, कार्बोनेट आयन. inhibition of this enzyme will excrete the sodium ion and carbonate ion, will cause diuresis. So carbonic anhydrase inhibitor, they act on a PCT only. Carbonic anhydrase inhibitors, they will act on a PCT site 1. Okay. Now this is site 2. In the PCT only there is a site 2. In the PCT there is only site 2. Site 2. So at this site most of the sugar molecules, amino acids and sodium that is being
absorbed into the blood. Okay, now at this site osmotic diuretics they will act. Osmotic diuretics, so they will prevent the reabsorption of sodium and water by exerting their osmotic properties over the PCD at a site 2. Now next is a descending limb, the descending limb of Henle. At this site also osmotic diuretics they will act. Now this is known as a hairpin of loop of Henle, ascending limb. Okay, so here is a site 3. Site 3. So loop diuretics, they are also known as a high ceiling diuretics or also known as a high efficacy diuretics. You know, they will act on a site 3. They will inhibit the sodium reabsorption at a site 3 by inhibiting the sodium chloride potassium symporter. Site 4 it is present in the DCT, डिजिटल कन्वर्टेड टेबल जो होता है वहाँ पे साइट 4 होता है, जो सोडियम पंप है रीअब्सॉर्प्शन के लिए वही को उसी को ही इन्वेट करेंगे, बाकी कुछ नहीं. नाउ साइट 4 at this site thiazide diuretics they will act. Thiazide diuretics they will act on a site 4. At a site 5 potassium sparing diuretics will act. At site 5 it is aldosterone derived absorption of your sodium, so that's why aldosterone antagonist are used like spironolactone. It is also considered as a potassium sparing diuretic. तो aldosterone का रोल क्या है? It is a antidiuretic हार्मोन. तो एंटीडायोटिक मतलब क्या? डायूरेसिस नहीं होने देगा. कैसे नहीं होने देगा? सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा बॉडी में. सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन बढ़ गया तो वाटर भी ड्रैग हो जाएगा उससे और डायूरेसिस नहीं होगा. तो आपने को क्या चाहिए? डायूरेसिस चाहिए, तो इसको इनहिबिट करना पड़ेगा. सो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट again one of the classes there. So these are the different sites. Site 4 is of thiazide and site 5 is of potassium sparing diuretics. कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. सो जैसे क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आपको आता है कि thiazide diuretics will act on a following site. Thiazide diuretics will act on a following site. They will give you site 1, site 2, site 3, site 4. Remember at a site 1 is present on a PCT. यहाँ पे कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर CA इनहिबिटर लाइक एस्टाजोलामाइड है ना, बेंजोलामाइड, एस्टाजोलामाइड, बेंजोलामाइड है ना, दे विल एक्ट. साइट 2 के ऊपर कौन एक्ट होता है? साइट 2 इज आल्सो प्रेजेंट इन द PCT. साइट 2 के ऊपर एक्ट होता है आपका ऑस्मोटिक डायरेटिक्स. साइट 2 ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है ना, साइट 2 ऑस्मोटिक डायरेटिक्स. फॉर एग्जांपल मैनेटॉल, यूरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा है ना, मैनेटॉल, यूरिया, बाकी है ना जो है ग्लिसरीन वगैरह, ग्लिसरॉल वगैरह, they will act on a site 2. Okay, now site 3 known as a loop diuretics. Site 3 will act on a thick ascending limb of loop of Henle. Thick ascending limb of loop of Henle. So they are nothing but the furosemide है ना, torsemide, bumetanide, ethacranic acid, so etc. These are the loop diuretics. They are known as high ceiling diuretic or high efficacy diuretic. So यहाँ से जब सबसे ज़्यादा वाटर का रिएब्सॉर्प्शन होता है तो ये ज़्यादा efficacy होते हैं. They are highly effective diuretics. Then site 4 is present on the DCT. Site 4 का होता है distal convoluted tubule में. Now at this site thiazide diuretics they will act. Thiazide diuretics ये सब क्या कर रहे हैं? ये सभी ड्रग सिर्फ एक्सेप्ट ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, ये सभी ड्रग सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन बढ़ा रहे हैं, सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन बढ़ रहे हैं. लास्ट में आता है पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स. सो इट विल एक्ट ऑन साइट 5. ये आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए. साइट 1 कार्बोनिक अनहाइड्रेट, साइट 2 ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, साइट 3 लूप डायरेटिक्स और है ना, साइट 4 इज फॉर योर thiazide diuretics and site 5 is for your पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स. तो ये आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए कि यहाँ पे ये ड्रग्स एक्ट करने वाले है ना. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि furosemide will act on a following site present on the nephron. Site 3 furosemide है ना. तो आपको आएगा क्लासिफिकेशन बाद में. पोटेशियम स्पेरिंग ड्रग, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स they will act on following part of your nephron. ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे. पहले लिखेंगे proximal convoluted tubule, early proximal convoluted tubule ऑप्शन ए. दूसरा आएगा late proximal convoluted tubule ना. ऑप्शन तीसरा आएगा आपका कि ascending limb of Henle. और ऑप्शन चौथा आएगा आपका
है ना, ऐसा डिस्टल कन्वर्टेड टेबल, मतलब ये लेट एंड ऑफ डिस्टल कन्वर्टेड टेबल, और मैक्सिमम पूछेंगे कलेक्टिंग टेबल, तो उसका आंसर कलेक्टिंग टेबल होगा। तो देखो यहाँ पे पीसीटी में पीसीटी है, ये हो गया आपका प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड टेबल, ये हो गया लूप ऑफ हेनले, ये हो गया डिस्टल कन्वर्टेड टेबल, ये हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट। सो साइट 1 इज फॉर योर, और एक बार मैं बोल रहा हूँ, साइट 1 इज फॉर योर कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, है ना, लाइक एसिटाजोलामाइड, बेंजोलामाइड, है ना। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स दे विल एक्ट ऑन अ लेट, लेट साइट, लेट पीसीटी, है ना। जो पीसीटी का लेट मतलब लास्ट वाला एरिया होता है, लेट लेट एरिया और लेट साइट ऑफ पीसीटी, दे विल एक्ट ऑन अ पीसीटी पे ही। then side, okay, then also they will act on a initial part of descending loop of Henle, also then loop diuretics they will act on a ascending limb of Henle, ascending limb of loop of Henle. Then thiazide diuretics will act on a DCD, distal convoluted tubule, and then potassium sparing diuretics they will act on a site known as a collecting duct, or you can say late DCD, है ना। देखो अर्ली पीसीटी क्या है, अर्ली पीसीटी ये अर्ली पीसीटी, लेट पीसीटी क्या है, ये पार्ट है। अर्ली डीसीटी कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है थायराइड वाला, लेट डीसीटी वाला इवन से ये पार्ट है ना, पोटेशियम स्पेयरिंग वाला। आर यू गेटिंग और नॉट, समझ रहा है? नाउ अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ एक्शन diuretics they are classified, okay. Now drugs which act on a proximal renal tubule, PCT के ऊपर कौन ड्रग एक्ट होगा? So in this category you have carbonic anhydrase inhibitor, acetazolamide, osmotic diuretics like mannitol, and mannitol is there, glycerin is there. Then centrally acting diuretics like example your caffeine, theophylline, aminopylline, they will act. At the site 2, site 2 is nothing but the ascending loop of Henle, अलग अलग साइड दिए है, आपको सब याद रखना है। ascending मतलब ऊपर जाना, ascending loop of Henle. So loop diuretics they will act. So obviously furosemide, bumetanide and ethacranic acid. Furosemide, bumetanide, ethacranic acid. Now at the site 3, at the site 3, okay. So at the site 3 thiazides, okay. Site 3 means early before the DCT. So thiazide diuretics and organic mercurials. Site 4 distal convoluted tubule, यहाँ पे है ना, थायराइड इसको साइड 4 में भी बोल सकते हो आप, साइड 4 थायराइड डायरेटिक, साइड 3 और साइड 4 नियर थोड़ा ही डिस्टेंस है इसमें, एंड साइड 4 और साइड 4 को कभी कभी साइड 5 भी बोलते हैं। सो साइड 4 5 यू नो योर पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स लाइक स्पाइरोलैक्टोन, ट्राइमेट्रिन, amiloride, etc. Now according to the efficiency or efficacy, so they are also classified into different types. Okay. So first one is nothing but the high efficacy diuretics. High efficacy diuretics, they will produce a lot of urine. High efficacy diuretics is they are known as a high ceiling diuretics. तो ये यूरिन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा करेंगे. So high efficacy और high ceiling diuretics. So example is furosemide, ethacranic acid, and ethacranic acid, furosemide, bumetanide, etc. So they are known as the loop diuretics. Loop diuretics are known as a high efficacy diuretics or high ceiling diuretics. Then moderate efficacy, medium efficacy और moderate efficacy diuretics. Moderate efficacy वाले कौन है? इसमें आपका होगा ऑस्मोटिक वाले. Moderate efficacy वाले है ना, moderate efficacy वाले कुछ इसमें ऑस्मोटिक वाले भी होते हैं और thiazides. So moderate efficacy thiazides like chlorothiazide, hydrochlorothiazide, benzoyl, polythiazide, chlorothalidone, metolazone and indapamide, zipamide, etc. Indapamide, zipamide, chlorothalidone, है ना. ये थायराइड वाले क्या है? मीडियम इफिकेसी, है ना, मीडियम इफिकेसी डायरेटिक्स, मतलब ये डायूरेसिस ज्यादा नहीं करेंगे, मीडियम करेंगे. मीडियम इफिकेसी डायरेटिक. हाई इफिकेसी कौन? जो लूप डायरेटिक्स होते हैं, है ना, प्रोसेमाइड और फ्यूरोसेमाइड सेम थिंग, फ्यूरोसेमाइड और प्रोसेमाइड, देन इथाक्निक एसिड, these are known as a loop diuretics. Then low efficacy diuretics,
ये बहुत ही कम मात्रा में यूरिन फॉर्मेशन करेंगे. लो एफिकेसी डायरेटिक्स, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स like mannitol, then potassium sparing diuretics जो है, they are also low efficacy diuretics. And carbonic anhydrase inhibitor like acetazolamide, benzolamide, they are also low efficacy. तो high efficacy में कौन आएगा आपका, याद रखना है loop diuretics. They are known as a high efficacy diuretics or they are known as a high ceiling diuretics. Moderate efficacy diuretics उसमें thiazide वाले आते हैं और कुछ ऑस्मोटिक वाले भी आते हैं, ऑस्मोटिक वाले भी, लेकिन सभी थायराइड केस में आते हैं मॉडरेट एफिकेसी. सो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, बेंजथायजाइड है ना, क्लोरोथायजाइड, देन क्लोरोथैलिडोन, इंडामाइड, जिपामाइड है ना, मेट्रोलाजोन. लो एफिकेसी में कौन होता है, लो एफिकेसी में पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स आते हैं आपके, और ऑस्मोटिक डायरेटिक्स आते हैं, और कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स. तो क्वेश्चन मोस्टली ये क्लासिफिकेशन के बेसिस के ऊपर आता है ना. तो लो एफिकेसी कौन सा है, हाई एफिकेसी कौन सा है ना, उसके बारे में इंपॉर्टेंट है. और एक बार यू कैन सी द क्लासिफिकेशन. तो डायरेटिक्स दे आर नथिंग बट दे इंक्रीजेस द rate of urine formation together with the natriuresis. Natriuresis means urine, excretion of urine. Now diuretics, they are classified differently. They are basically classified in different way in different books. So according to the their site of action, they are classified. According to the chemical nature, they are classified. According to the efficacy of diuresis, they are classified. Okay. So again, weak diuretics, first class is a weak diuretics. So they will produce only mild diuresis. ये जो weak diuretics होते हैं, ये कम diuresis करेंगे. तो इसमें कौन है भाई, इसमें osmotic diuretics. So osmotic वाले में है ना, weak में आता है आपका salt, potassium salt, sodium salt. So they will cause weak diuresis. Xanthin derivative और centrally acting diuretics बोल सकते हो आप इसको, है ना, और या फिर vasodilator भी बोल सकते हो. So aminophylline, caffeine, theophylline, these are nothing but the xanthin. Then again weak में ही आता है आपका, weak diuretics में आता है carbonic anhydrase inhibitor. So इसका एग्जांपल है acetazolamide and benzolamide. बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके. सेकंड आता है moderate effective और moderate efficacy diuretics. Moderate efficacy diuretics और moderate effective diuretics है ना, इसको बोलते हैं, इसको अपन एक बोलेंगे वीक सीलिंग डायरेटिक्स. इसका और एक टर्म है वीक सीलिंग डायरेटिक्स. इसको बोलेंगे मॉडरेट सीलिंग डायरेटिक्स. इसको बाद में देखते हैं. सो मॉडरेट इफेक्टिव डायरेटिक्स, इन दैट सम आर द मॉडरेट इफेक्टिव ऑस्मोटिक डायरेटिक लाइक मेन्टॉल, isosorbide, sucrose and glycerol, they are the moderate effective diuretics. Thiazide diuretics, they are also moderate diuretics. Example is chlorothalidone, chloroxazone, okay, chloroxazone, okay, clopamide, zipamide, indapamide, chlorothalidone, okay, then chlorothiazide, hydrochlorothiazide, benzothiazide. So they are the moderate effective diuretics or moderate sealing diuretics. They have a rapid onset of action. They have a rapid onset of action and 10% of excretion, okay, or 10% of excretion filtered. जो फिल्टर्ड हो चुका है आपका, उसमें का 10% सोडियम क्लोराइड, 10% of filtered sodium chloride. So they will cause reabsorption of only 10% sodium. They will only prevent the reabsorption of 10% sodium, and because of that 10% sodium, so 20% diuresis will occur. They have wide spectrum and wide duration of action. So they will act for 8 to 72 hours. They are effective in the patient with reduced glomerular filtration rate. And you know, the thiazide diuretics are the first line drug in the treatment of hypertension. तो ये भी याद रखना है. Then third आता है आपका very efficacious और high sealing diuretics, or also known as loop diuretics. Very efficiency or very effective diuretics or high sealing diuretics or furosemide है ना, weak sealing, medium sealing and high sealing. furosemide, meprucide, ethaconic acid, they are the drug. इनको एक adverse effect होता है, वो they will damage the 8th cranial nerve, so deafness, okay, hearing impairment.
They will have a rapid onset and shorter duration of action. They will have a rapid onset of action but short duration of action, only 1 to 1.5 hours. 20% excreted filtered sodium chloride. They will they will inhibit the reabsorption of sodium. Only 20%. They will inhibit only 20% reabsorption of sodium. Still they are a very effective diuretics. मतलब अगर पूरा सोडियम, they will inhibit only 20% of reabsorption of sodium. मतलब ये क्या करेंगे कि 20% सोडियम का reabsorption इनिबिट करेंगे, मतलब 20% सोडियम क्या होगा, बाहर जाएगा. So only 20% sodium they used to excrete. You know, moderate leaky acid diuretics, they only 10% sodium they used to excrete. But 10% सोडियम जाएगा तो 20 टाइम्स उसका डायोसिस होता है. यहाँ पे 20% सोडियम जाएगा तो 40 टाइम्स डायोसिस होता है. मतलब दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हाई सीलिंग डायोटिक्स. लास्ट में आता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स. ये पोटेशियम स्पेयरिंग वाला क्या मैटर है? What these drug are they doing? They are preventing the reabsorption of sodium. So if there is a prevention of sodium reabsorption, so there is prevention of water reabsorption, and potassium is it is smaller than sodium. So along with the, if there is a high ceiling diuretics, what they do? They excrete the sodium, they excrete the potassium, they excrete the calcium, and also water. Okay, that's why they are high ceiling diuretics. So that's why they causes severe disturbances in the electrolyte balance of your body. तो आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है ना वो पूरा बिगाड़ देता है, सब हकल देगा. सोडियम को हकल देगा, पोटेशियम को हकल देगा, है ना. अगर सोडियम को हकल देगा तो ऑब्वियसली if there is a decreased sodium level in the body known as a hyponatremia. Okay? If there is a decreased sodium level, decreased potassium level in the body known as hypokalemia. If there is decreased calcium level in the body known as hypocalcemia. अगर बढ़ गए तो हाइपर होगा. So obviously these loop diuretics they will cause hyponatremia, hypokalemia, hypocalcemia. Okay? Most of these diuretics they will cause hypokalemia. Okay? Except potassium sparing diuretics. तो स्पेयर तो होना चाहिए ना कुछ, जैसे सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन प्रिवेंट कर रहा है, मतलब उसकी एक्सचेंज में पोटेशियम जा रहा है ना, दैट्स व्हाई दे कॉज द पोटेशियम लॉस एंड हाइपोकैलेमिया. एंड दैट्स व्हाई फोर्थ कैटेगरी पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक. इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं. कौन कौन है एग्जांपल याद रखना है. ट्राइमेट्रिन, अमीलोराइड एंड स्पाइरोनोलैक्टोन. ट्राइमेट्रिन, अमीलोराइड एंड स्पाइरोनोलैक्टोन, दे आर यूजफुल एज एडजॉइनिंग ड्रग फ्रॉम ग्रुप 2, है ना. जो होते हैं मीडियम इफेक्टिव डायरेटिक्स थायराइड वाले, तो उनके साथ में पोटेशियम स्पेयरिंग वाले यूज होते हैं. ग्रुप 3 में भी यूज होते हैं बिकॉज ऑफ देयर पोटेशियम स्पेयरिंग इफेक्ट. आर यू गेटिंग माय वॉइस? समझते हैं तुम्हाला इतलं काही? You can see the classification again over here. Diuretics, they are classified into different way. First class is nothing but the high ceiling diuretics, or you can say they are known as a highly efficacious diuretics, or they are also known as a loop diuretics. So what they do? They inhibit the sodium potassium chloride contraport. Inhibition of sodium potassium chloride contraport where in the thick ascending limb of your loop of Mendel. ये क्या करते हैं? उसको इनहिबिट कर दे. उसका रोल क्या होता है कि सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन करेगा, पोटेशियम वहाँ पे छोड़ देगा, है ना, ऐसा. So it will exchange the sodium potassium for the chloride. So loop diuretics example is a furosemide or prosemide, then bumetanide and torsemide. तो या इसमें क्या है? माइड सेमाइड है ना. फ्यूरोसेमाइड, बुमेटेनाइड, टॉर्सेमाइड. सेमाइड है यहाँ पे, सेमाइड है. फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड एंड बुमेटेनाइड, दे आर द लूप डायरेटिक्स. इसमें और भी आता है इथाक्रेनिक एसिड. इथाक्रेनिक एसिड इट इज नो मोर यूज्ड बिकॉज इज हाईली ओटोटॉक्सिक ड्रग. इथाक्रेनिक एसिड सबसे ज्यादा ओटोटॉक्सिटी इसका इथाक्रेनिक एसिड. इट कॉजेज द हियरिंग इम्पेयरमेंट and deafness. Also your furosemide also causes the same thing, but ethacrenic acid is having high potential to cause the deafness. Okay, then next class था आपका medium efficacy diuretics. उसमें आएगा आपका thiazide वाला medium efficacy diuretics. So they will act so they will inhibit the sodium chloride symport
they will inhibit the sodium chloride import at the DCT, distal convertative, at the DCT, right? So example is nothing but the, in that also you have two subtypes. So benzothiazides, they are known as a true thiazide diuretics. Benzothiazides, they are known as a true thiazide diuretics because ये सब thiazide है. इसमें आता है आपका हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, हाइड्रोफ्लोमेथाजाइड, बेंज थाइजाइड, है ना, क्लोरोथाइजाइड, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, है ना, बेंज थाइजाइड, ये सब क्या थाइजाइड डायरेटिक्स. They will have a thiazide ring in their base thiazide ring in their structure. Now there are certain drugs, they are not a thiazide, they will not have thiazide or base thiazide ring in their structure, but they will act in a similar way like thiazide. That's why they are known as thiazide like diuretics. Thiazide like diuretics, उसमें आएगा क्लोरथैलिडोन, है ना, मेटोलेजोन, then zipamide, indapamide and clopamide. So माइड, है ना, माइड यहाँ पे आएगा, zipamide, indapamide, clopamide, है ना, क्लोरथैलिडोन, मेटोलेजोन. These are the thiazide like diuretics. They are not the thiazide diuretics. उसमें thiazide का रिंग नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, but still they are known as thiazide like diuretics. उनके जैसे मतलब कौन से कॉन्टेक्स्ट में, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में वो सिमिलर काम करता है. They will act on a same thing, like they will inhibit sodium chloride import at the DCT. That's why they are known as thiazide like diuretics. ये हो गया दूसरा क्लास. नाउ थर्ड क्लास इज द वीक डायरेटिक्स. वीक डायरेटिक, they are known as low efficacy diuretics or low ceiling diuretics. low efficacy और वीक और एडजुवेंट डायरेटिक्स. इसमें आता है कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर, कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर, CA इनहिबिटर. इसका एग्जांपल होता है आपका एस्टाजोलामाइड एंड ब्रेंजोलामाइड, एस्टाजोलामाइड, ब्रेंजोलामाइड. देन नेक्स्ट आता है आपका ऑस्मोटिक डायरेटिक्स. ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में आएगा मैनेटॉल, आइसोसोर्बाइड, ग्लिसरॉल, यूरिया भी आता है इसमें, यूरिया, ग्लिसरॉल, है ना, पोटेशियम सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट. देन आता है नेक्स्ट आता है लास्ट क्लास आता है आपका पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स. वीक डायरेटिक्स में आता है पोटेशियम स्पेयरिंग. इसमें भी दो टाइप का आता है. ओके, पोटेशियम स्पेयरिंग में दो टाइप का आता है. सो अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर. अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, so remember spironolactone and ipreilenon, spironolactone and ipreilenon, ipreilenon, spironolactone and ipreilenon. ipreilenon क्या है? It is an active metabolite of spironolactone. Then इसमें ही आता है आपका renal epithelial sodium channel inhibitors, renal epithelial sodium channel inhibitor. इसमें आता है अमीलोराइड एंड ट्राइमेट्रिन. इसकी मैकेनिज्म के ऊपर GPAT 2023 में क्वेश्चन है. आर यू गेटिंग दिस क्लासिफिकेशन और नॉट? आर यू गेटिंग द क्लासिफिकेशन? ओके, हाई सीलिंग में आएगा आपका, है ना, लूप डायरेटिक्स. हाई सीलिंग मतलब लूप डायरेटिक्स, दे इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कॉन्ट्रापोर्ट, है ना, प्रोसेमाइड, प्यूमेटिनाइड, टोरसेमाइड. मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स में आएगा आपका थायजाइड वाले एंड लाइक थायजाइड लाइक वाले, दे इनहिबिट द सोडियम क्लोराइड इंपोर्ट. थायजाइड में हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, है ना, हाइड्रोफ्लोमेथाजाइड एंड बेंज थायजाइड. बाद में इसमें थायजाइड लाइक में आएगा क्लोरोथाइडोन, मेटोलेजोन, जिपामाइड, इंडापामाइड, क्लोपामाइड. देन आपका वीक डायरेटिक्स में और लो सीलिंग डायरेटिक्स में आएगा कार्बनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर, है ना, जोलामाइड, एसिटाजोलामाइड और बेंजोलामाइड. ठीक है. देन ऑस्मोटिक में मैनेटॉल, आइसोसोर्बाइड एंड ग्लिसरॉल, यूरिया, है ना, पोटेशियम एंड सोडियम सॉल्ट्स. पोटेशियम स्पेयरिंग वाले में दो आता है. पोटेशियम स्पेयरिंग वाले में दो डायरेटिक है. कौन सा? अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, स्पाइरोलैक्टोन, इप्रिलेनोन एंड renal epithelial sodium reabsorption inhibitor, they are known as amiloride and trimetrin. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. So following drug inhibit the reabsorption of sodium by inhibiting the renal epithelial sodium channel. ऐसा क्वेश्चन आता है. उसमें ऑप्शन था फ्यूरोसेमाइड, उसमें ऑप्शन था हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, उसमें ऑप्शन था आपका एस्टाजोलामाइड एंड अमीलोराइड. So this amiloride is a drug. Okay? Amiloride is a potassium sparing diuretics which inhibit the renal epithelial sodium ion channel.
और डायरेटिक्स मतलब क्या है? डायरेटिक्स मतलब दे विल इंक्रीज द यूरिन फॉर्मेशन, है ना? जैसे डायरेटिक्स होते हैं वैसे एंटी डायरेटिक होते हैं. सो एंटी डायरेटिक मतलब क्या? दे विल नॉट let urine to be formed. What they will do? Antidiuretics means they are against the diuresis. They are against the diuresis. Antidiuretics. They will cause sodium and water retention. Sodium and water retention. डायरेटिक्स वाले क्या करते हैं? सोडियम वाटर को बाहर बॉडी के हकाल देते हैं, तभी तो डायलिसिस होता है. और ये एंटीडायरेटिक वाले क्या करते हैं कि ये सोडियम वाटर को रीएब्सॉर्प्शन बढ़ा देंगे. तो एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है एडीएच एंड इट्स एनालॉग वैसोप्रेसिन, desmopressin, लेप्रेसिन एंड टेलिप्रेसिन. ये तीनों जो है वो सिंथेटिक डेरिवेटिव है, सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ वैसोप्रेसिन. इट इज अ नेचुरल एंटीडायरेटिक हार्मोन. नाइट्रियोटिक्स उसमें थायजाइड एंड अमीलोराइड आता है. मिसलेनियस में कार्बामाजेपिन, क्लोरप्रोमाइड एंड इंडोमिथासिन. So antidiuretics, diuretics and antidiuretics. Now we'll see individual drugs. First is nothing but the carbonic anhydrase inhibitor. Carbonic anhydrase inhibitor example is a acetazolamide and brinzolamide. Acetazolamide and brinzolamide. But this drug where they will act on a site 1. इनका साइट क्या है? साइट 1. साइट 1 कहाँ पे होता है? पीसीटी में. पीसीटी में ये एक्ट होंगे साइट 1. They are the medium or they are the low efficacy diuretics. They are the low efficacy diuretics. Site of action is nothing but the PCD, site 1, right? What is the mechanism of action of this drug? So they inhibit the carbonic anhydrase enzyme. There are different type of carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase 5, carbonic anhydrase 2, carbonic anhydrase 3. The type होते हैं. They are present in the lumen, they are present in the extracellularly. So वो अलग बात है. If you want to read that much in the details, you can read from books. But what they do, they inhibit the carbonic anhydrase inhibitor by non-competitive mechanism. Now, what is the role of this enzyme? The enzyme is required for the sodium and carbonate bicarbonate reabsorption. सोडियम कार्बोनेट reabsorption के लिए लगता है. अगर सोडियम कार्बोनेट का reabsorption नहीं हुआ तो क्या होगा? सोडियम का एक्सक्रीशन होगा, वाटर का भी हो जाएगा, डाइजेस्ट होगा. अगर कार्बोनेट का रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो, कार्बोनेट क्या है? कार्बोनेट आयंस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अगेन बफर सिस्टम ऑफ योर बॉडी, है ना? कार्बन बाइकार्बोनेट मतलब बेसिक होता है ना? अगर बेसिक आयन भी रिमूव किया जाए बॉडी में से तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में क्या डेवलप हो सकता है? क्या होगा डेवलप आपकी बॉडी में? अगर बेसिसिटी कम हो रहा है आपकी बॉडी का, क्योंकि कार्बोनिक एनाहाइड्रेस जो एंजाइम है वो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड कार्बोनेट आयन. अगर इसको इनहिबिट किया तो सोडियम निकल जाएगा और कार्बोनेट भी निकल जाएगा. तो आपकी बॉडी में क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है? प्रोबेबल एडवर्स. सो ऑब्वियसली उसका एडवर्स इफेक्ट ही यस उसका एडवर्स इफेक्ट ही एसिडोसिस है. तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, बस सिर्फ थोड़ा सा थिंक करके आपको पढ़ना है. नाउ कार्बोनिक एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयन व्हिच एक्सचेंजेस विद द सोडियम. Inhibition of this carbonic anhydrase, there is no hydrogen ion to exchange with the sodium, and that's why there is sodium excretion, and along with the sodium water is also excreted. Now inhibition of this carbonic anhydrase causes decrease in the production of aqueous humor in the eyes. Inhibition of this carbonic anhydrase, because this carbonic anhydrase is not only present in the tubules, it is also present in the brain, also present in the eyes. तो कार्बोनिक anhydrase सिर्फ ल्यूमेन में नहीं होता है, मतलब किडनी में नहीं होता है, ये आपके ब्रेन में भी होता है, ये आपके आईज में भी होता है. तो आईज में इसका काम क्या है कि बाइकार्बोनेट आयन बनाना और एक्वियस ह्यूमर फॉर्मेशन करना. एक्वियस ह्यूमर किस में बढ़ता है? ग्लाउकोमा में बढ़ता है, ग्लाउकोमा. So if anybody is suffering from glaucoma, his aqueous humor is increased. Either production of aqueous humor is increased or the drainage of aqueous humor is decreased. So that's why he is suffering from high intraocular pressure. Inhibition of this carbonic anhydrase in the kidney causes the diuresis. Inhibition of this carbonic anhydrase in the eyes will cause decrease in the aqueous humor formation. And that's why they will decrease the aqueous humor. That it will decrease the intraocular tension. And that's why this carbonic anhydrase inhibitor also used in the glaucoma, okay? And also useful in the glaucoma, okay? And also this decreases the formation of
CSF का फॉर्मेशन भी डिक्रीज करता है एंड आल्सो इट इज एंटी एपिलेप्टिक आल्सो इट इज एंटी एपिलेप्टिक कार्बोनिक कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर लाइक एस्टाजोलामाइड ये एपिलेप्सी में आल्सो एपिलेप्सी में इसका यूज होता है बिकॉज ये क्या होता है ये क्या करता है it will produce sedation so it is a depressant drug type of drug so obviously it is anti-epileptic so okay so increased activity of carbonic anhydrous is it has been seen in the epilepsy also so inhibition of this carbonic anhydrous in the brain causes the anti-epileptic effect तो ये इसका ऑब्वियसली ये सेंट्रल डिप्रेशन है और एक एडवर्स इफेक्ट होगा ये क्या करेगा सेडेशन करेगा ऑब्वियसली सेडेशन इट विल आल्सो कॉज सेडेशन एंड ये क्या है इट इज अ लो एफिकेसी डायरेटिक्स है ना लो एफिकेसी डायरेटिक है सो दैट्स व्हाई ज्यादा कुछ आपका इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस नहीं करेगा सो एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होंगे इसके ऑब्वियसली मेटाबॉलिक एसिडोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस है यूरिनरी अल्कलोसिस करेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस करता है और यूरिनरी अल्कलोसिस करता है हाइपोकैलेमिया ओकेजनली इट कैन कॉज ड्राउजीनेस सेडनेस पैरास्थेशिया मतलब नमनेस इन द लेग नमनेस अगर आप आपका हाथ रख दो और उसके ऊपर सो जाओ 1-1.5 घंटा क्या होगा आपके हाथ में मूंगियां आएंगी तो मूंगियां मतलब क्या पैरास्थेशिया इट कैन प्रेसिपिटेट रीनल कैल्कुलाई एंड ब्लड डिस्कैरेसिस मतलब एक किडनी में कुछ स्टोन्स वगैरह भी कर सकता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो कार्बोनिक अनहाइड्रेस का रोल भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 will combine to form a bicarbonate with the help of carbonic anhydrous. Again, this bicarbonate will split into hydrogen and carbonic acid. Again, with the help of carbonic anhydrous. यहाँ पे भी carbonic anhydrous काम करता है. So, what are the uses of these drugs? So, they are used in the prophylaxis and treatment of high altitude illness. High altitude illness due to its seen as depressant effect. Okay, then it is also used in the cerebral and pulmonary syndrome. Pulmonary syndrome. It is a drug of choice in the acute mountain sickness and cerebral edema. Cerebral में pressure बढ़ गया. Cerebral edema में it is a drug of choice in acute mountain sickness. मतलब हाई अल्टीट्यूड के ऊपर अगर गए आप तो आपको सिकनेस होता है वोमिटिंग होता है नौशिया होता है सो देयर इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस एंड आल्सो ड्रग ऑफ चॉइस इन द सेरेब्रल एडिमा ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द पीरियोडिक पैरालिसिस अटैक आल्सो इट इज अ वीक डायरेटिक्स तो उसके ऊपर क्वेश्चन कहाँ बनते भाई तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा आपको ये इसके ऊपर कार्बनिक एसिड एंड एस्टोजोलामाइड साइट के ऊपर क्वेश्चन आएगा उसके एडवर्स इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा उसके यूजेस के ऊपर क्वेश्चन आएगा आर यू गेटिंग और नॉट समझ रहे हैं आपको यहाँ पे नाउ यू कैन सी ओवर हियर द मैकेनिज्म अगेन दिस वन इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दिस वन इज नोन एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल दिस वन इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड दिस वन इज lumen so what is the role of your carbonic anhydrase inhibitor carbonic anhydrase is very important for the reabsorption of sodium and bicarbonate ion ये reabsorption हो रहा है उसका ठीक है now inhibition of this enzyme okay? inhibition of this enzyme leads to यहाँ पे inhibit किया और lumen में भी एक काम करता है so this enzyme is also present in the lumen so at this it is known as a carbonic anhydrase 5 and at this it is known as a carbonic anhydrase so luminal okay in the lumen carbonate ions by sodium bicarbonate okay that is formed and it is splitted down into sodium and carbonate ion by again carbonic anhydrase now this carbonate ion will take hydrogen to form a carbonic acid ये कार्बन आयन हाइड्रोजन को लेके कार्बोनिक एसिड बनाएगा कार्बोनिक एसिड को अगेन कार्बनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर कार्बनिक अनहाइड्रेस एंजाइम वो स्प्लिट करेगा वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में ये वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ल्यूमेन के
प्रॉक्सिमल ट्यूबुल में आएंगे और वहां पे फिर से क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड विद हेल्प ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेस, है ना। और ये कार्बोनिक एसिड जो है ना, कार्बोनिक एसिड फिर से इसका स्प्लिटिंग होगा, है ना, कार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन में। और ये हाइड्रोजन आयन जो सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप होता है, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप, तो ये क्या करता है, सोडियम को अंदर लेता है, हाइड्रोजन को बाहर निकलता है। तो यहाँ पे जो सोडियम बचा था उसको अंदर लेना है, ये सोडियम को अंदर लेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आया उसको बाहर निकलेगा, एक्सचेंज पंप। ये सोडियम बाद में, ये जो सोडियम है यहाँ पे अगेन सोडियम एंड बाइकार्बोनेट का एब्सॉर्प्शन जो करता है वहां तक आएगा और वो सोडियम का एब्सॉर्प्शन हो जाएगा। Now, that's how this enzyme is involved in the reabsorption of sodium and carbonate ion. Now, inhibition of this enzyme. Now, inhibition of this enzyme, what it does? अगर इसको inhibit किया, okay, suppose if this carbonic anhydrase is inhibited by acetazolamide, so there will be no formation of, there is no formation of water and carbon dioxide in the lumen from the carbonic acid, because from this sodium bicarbonate, sodium ion is detached over here. Sodium ion is dissociated. Carbonate is ion is also there. Carbonate ion will take hydrogen to form a carbonic acid. This carbonic acid is broken down by carbonic anhydrase into carbon dioxide and water. So that is transported in the proximal tubule cell. Now at this cell, again carbonic anhydrase, what will it do? So ये carbonic anhydrase by combining with the this water and carbon dioxide, it will form a carbonic acid, right? और ये भी नहीं बनेगा, अगर कार्बोनिक एसिड नहीं बना तो यहाँ पे कार्बोनेट आयन की कमी हो जाएगी, अगर यहाँ पे कार्बोनेट आयन कमी है तो हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी, हाइड्रोजन की कमी अगर है तो हाइड्रोजन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर एक्सचेंज विद सोडियम, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं तो ये सोडियम अंदर कैसे आएगा, देयर विल नॉट बी रीअब्सॉर्प्शन, रीअब्सॉर्प्शन नहीं हुआ मतलब क्या हुआ, ये जो सोडियम है ये यहीं पे रह जाएगा लुमेन में, ये निकल जाएगा, डाइवर्सिस हो जाएगा, उसके साथ में वाटर भी जाएगा। दैट्स हाउ कार्बोनिक अनहाइड्रेस विल एक्ट, कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर्स विल एक्ट। आर यू गेटिंग और नॉट? ऑस्मोटिक डायोटिक्स, so mannitol is the example, mannitol is there, isosorbide is there, urea is there, glycerin is there, they will act on a side second, वो भी क्या है, पीसीटी में होता है, proximal converted